Assalamualaikum and very good morning to everyone. Children, we are learning class 8 biology. Dear children, we are learning chapter number 2 microorganisms, friends and foe. In that we had completed the first part of the chapter, that is useful microorganisms. How microorganisms are useful to us, that we had seen in our previous videos also. And now we are going to start with the second part of this chapter, that is harmful microorganisms. So जिस तरीके से microorganisms हमें useful हैं, same way the several microorganisms are present which are having the harmful effects, which are giving harmful effects also. In short, they are harmful. So now today in this video we are going to learn the second part of the chapter number 2, microorganisms, friends and foe, that harmful microorganisms. So first of all, we'll talk about humans, that how microorganisms are harmful to the humans. So children, some of the microorganisms cause diseases in human beings, plants and animals. बहुत सारे ऐसे microorganisms हैं जो humans में, प्लांट्स में, एनिमल्स में क्या कॉज करते हैं? डिजीज़ कॉज करते हैं. तो ऐसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो डिजीज़ कॉज करते हैं, दे आर कॉल्ड एज पैथोजन. सो दिस इज़ द न्यू डेफिनेशन फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट आर पैथोजन चिल्ड्रन. So remember, disease causing microorganisms are called as pathogen. Pathogen किसे कहा जाता है? ऐसे सारी microorganisms नहीं, ऐसे microorganisms जो क्या cause करते हैं? Disease cause करते हैं. They are called as what? Pathogens. Now the pathogens, or we can say these microorganisms जो disease cause करते हैं, how they are enter inside our body. So children, they are enter inside our body through the air we breathe, through the water we drink, through the food we eat, or also they are transmitted by direct contact with an infected person, or sometimes they are carried out by the different animals. We will discuss in later how the different modes of transmission of disease will be there. Right. Here another important definition for you children, that is communicable diseases. So what are communicable diseases? So such diseases which can spread from an infected person to healthy person. ऐसे diseases जो एक infected person से दूसरे healthy person तक फैलते हैं, spread होते हैं, transmit होते हैं, ऐसे diseases को क्या कहा जाता है? communicable diseases. और जो डिजीज़ नहीं फैलते हैं उन्हें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहा जाता है. राइट. कम्युनिकेबल डिजीज़, डियर चिल्ड्रन, स्प्रेडिंग ऑफ द डिजीज़ का बहुत बेस्ट एग्जांपल आप लोग कुछ जानते हो, जिसकी वजह से ये हम आज लाइव क्लासेस कर रहे हैं. राइट. दैट इज़ द कोविड-19. कोविड-19 एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, वो स्प्रेड होता है फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन थ्रू द एयर. ठीक है, इसीलिए हम हमारे मुंह और नाक को कवर करते हैं. वी आर वियरिंग मास्क टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, ताकि थ्रू एयर वो वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर ना हो जाए. गेटिंग? सो कम्युनिकेबल डिजीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस, कि डिजीजेस कौन से अलग अलग मोड से ट्रांसमिट होता है. सो द फर्स्ट मोड इज थ्रू द एयर वी ब्रीथ. राइट. जो भी एयर हम ब्रीथ करते हैं उससे कैसे ट्रांसमिशन होता है, लेट्स सी. सो एग्जांपल्स दिए हैं एयरबॉर्न डिजीज़ के, कॉमन कोल्ड, न्यूमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस. ये जितने भी डिजीज़ हैं वो स्प्रेड होते हैं थ्रू द एयर. फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल दूँ मैं आप लोगों को, दैट व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड मतलब नॉर्मल सर्दी खांसी जो हमें होती है, जब ऐसा एक पर्सन स्नीज करता है, व्हेन द पर्सन स्नीजेस और कफ्स, फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग जर्म्स आर रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर. और जब हेल्दी पर्सन के अंदर ऐसे जर्म्स कैरिंग एयर जाएगी, जब हेल्दी पर्सन ऐसी एयर ब्रीथ इन करेगा, तो क्या होगा? डेफिनेटली चांसेस रहेंगे कि उसको भी इन्फेक्शन होगा. दैट इज़ वाई we should have to always keep our hand or handkerchief on our mouth and nose while coughing and sneezing. Clear? Okay. Now the next mode of transmission is through the water we drink. So children, कुछ diseases ऐसे हैं जो पानी पीने से होते हैं. For example, waterborne diseases है cholera, typhoid and jaundice.
सो कॉलेरा कॉजिंग माइक्रोब्स जो हैं वो हेल्दी पर्सन की बॉडी के अंदर एंटर होते हैं थ्रू द वाटर, वॉट एवर ही और शी ड्रिंक्स, right? So that is why after floods or any other natural calamity we are advised to drink boiled water. Why? Because many disease causing microorganisms are present in the water at that time. So boiling of water kills that microorganisms and we can drink pure water, right? Okay, now the third mode of transmission is through through the food we eat. So children, it is advisable to us that we should have to wash fruits and vegetables after bringing them from the market, because possibility है कि उन food के ऊपर भी spores of fungi या protozoa या bacteria present हो सकते हैं. So we should have to always wash our food and then we eat. Now the last topic is through insects and animals. So there are some insects and there are some animals which act as carriers of what? Disease causing microbes. तो ऐसे organisms या ऐसे animals जो अपने अंदर disease causing microbe को carry करते हैं from one person to another, they are called as vectors. So here another definition children for you. What are vectors? So vectors are the organisms which carry the disease causing microbes from an infected person to healthy person. उसके एग्जाम्पल में दो हैं, एक है हाउस फ्लाई और दूसरा है मॉस्किटो. हाउस फ्लाई, यू वेरी वेल नो चिल्ड्रन दैट हाउस फ्लाई कलेक्ट्स द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स ऑन इट्स लेग्स एंड माउथ पार्ट्स वेयर द पर्टिकुलर वेयर दे आर सिटिंग, right? From there, the same house fly when sits on our exposed food items, it leaves disease causing microbes on our food, and when we consume such food we get infected, right? So it is also advisable that we should have to always cover our food and we should have to avoid eating uncovered food items. Okay, then after mosquito. So children, you have heard about the disease called as malaria and dengue. So malaria and dengue, they are the diseases which are spread by the mosquitoes, but they are only spread by the mosquitoes, they are not the cause of the disease. Female Anopheles mosquito carrying the Plasmodium protozoa within it, and when such mosquito bites a human, then it causes malaria. So remember, Plasmodium causes malaria, and same dengue is caused by the dengue virus which is carried by the female Aedes mosquito. Clear everyone? When such mosquitoes sucks the blood of human beings, while doing so they transmits protozoa and viruses into the human body, and they causes then diseases like malaria and dengue. Now the next important thing is children, that all the mosquitoes, they are normally breed in water. So we should not collect water in the surrounding area of our homes. We should have to keep our surroundings clean and dry. Also, we can use mosquito repellent creams, right, to protect ourselves from mosquito bites, and also we can use mosquito nets. So this is all about the harmful microorganisms in humans. In our next video, we will see harmful microorganisms in animals and plants.